जय श्री फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन के इस लेक्चर 51 में आज की टॉपिक रहेंगे हमारे सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो लेट अस स्टार्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट? बेसिकली सैटेलाइट इज नथिंग बट अ body which continuously revolves on its own around a much larger body in a stable orbit. As you can see in this diagram, there is a sun, earth and moon. So sun is revolving around earth and similarly moon is revolving around earth. So this earth is nothing but the satellite of sun while moon is a satellite of earth. Now there are two types of satellite. One is natural, another is artificial satellite. So let us see one by one. What is natural satellite? A natural satellite is basically created by nature. So that's why it is called natural satellite. Moon, for example, is a natural satellite of Earth, which in turn is a satellite of the Sun. Okay. Similarly, how to define this artificial satellite? A man-made satellite is called an artificial satellite. Russians were the first to put an artificial satellite, for example, Sputnik 1, in an orbit around the Earth on the October 4th, 1957. Okay. Now let us discuss about orbital velocity. Now you can see in this diagram there is a diagram which shows the Earth and there is a imaginary orbit. Okay. The radius of Earth is capital R and this orbit is having a distance of h. Okay. So orbital velocity is the velocity at which a body revolves around the another body. Orbital velocity, the velocity required to put the satellite into its orbit around the Earth. For example, in this case, you can see this particle having a mass or satellite having a mass m is revolving with the velocity v naught. Okay, the total distance of this satellite from center of Earth is r plus h, as seen from this diagram. Okay, so now see further, there are three different cases. There is circular path. In this case, there is the Earth. Okay, then there is a gravitational force of attraction, because we already know for circular motion there should be a centripetal force. Okay, and the velocity of this satellite is supposed in this direction, which is tangential to the circular path. Now v is greater than v orbital. What happens if the velocity of this satellite is greater than v orbital? Then what happens? The orbital radius increases. Similarly, if v is less than orbital velocity, then the orbital radius decreases. So these are two important things which are to be noted. Now let us derive an expression for the formula of orbital velocity. With reference to this diagram, we can see the procedure. First of all, we will define different notations. For example, capital M is the mass of Earth, capital R is the radius of Earth, and then M is the mass of satellite. Small m, v naught is orbital velocity of satellite. Small h is the height above Earth's surface, and r plus h is nothing but the orbital radius of satellite. Okay, clear? Now, force of gravity on satellite is nothing but Fg. We have already studied this thing in detail. Fg is equal to g capital M into small m upon r plus h whole square. Now, centripetal force required by the satellite to keep it in orbit is this Fc. Centripetal force is m v naught square upon r plus h. Okay. So in equilibrium, the centripetal force provided by the gravitational force is equal to same. So Fc is equal to Fg. आप दोनों की इक्वेट कर दी, तो you are getting m v naught square upon r plus h, that is equal to g m into m upon r plus h का whole square. So if you are solving this, you are getting v naught square equal to capital G into capital M upon r plus h. So from this we can finally find the expression for orbital velocity as v naught is equal to under root g m upon r plus h. But g is equal to जी एम अपॉन आर स्क्वायर एज पर आवर प्रीवियस नॉलेज. सो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर यहाँ प्लेस कर दिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच. सो फाइनली यू आर सेइंग दैट दिस वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल आर अंडर रूट स्मॉल जी अपॉन आर प्लस एच. सो इफ यू आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस एक्सप्रेशन, व्हाट यू आर गेटिंग, दैट इज इफ एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द आर radius of Earth, then satellite close to Earth surface, then in that case v naught orbital velocity is nothing but under root g into r. Okay, so finally we can say v naught is equal to under root 7.92 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ, बिकॉज रेडियस अर्थ का आपको पता है और जी की वैल्यू पता है, तो आप इसमें करीब करीब इसको 8 किलोमीटर पर सेकंड मान सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी. ओके, नाउ दिस इज एन एक्सप्रेशन. Okay, now there are certain points which are to be remembered regarding the orbital velocity. With reference to the same diagram, number one, this orbital velocity is independent of the mass of satellite. Number two, it decreases, means orbital velocity decreases with increase in the radius of the orbit. ओके, जैसे मैंने आपको बताया था. और थर्ड पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट अबाउट विच द सैटेलाइट रिवॉल्व्स. तो वी नॉट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल रूट. ओके, तो इसके बेसिस पर हम ये तीन पॉइंट्स यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी? अब देखिए एस्केप वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं, तो एस्केप वेलोसिटी वी ऑलरेडी नो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जीआर. ओके, दैट इज इक्वेशन 1. सिमिलरली ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हमने जस्ट देखा कि वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जीआर, इक्वेशन 1 एंड 2. So you can finally say with reference to these two diagrams, दो इक्वेशन, v is equal to under root 2 times v naught, means the escape velocity of a body from the earth's surface is root 2 times its velocity in a circular orbit just above the earth's surface. Okay, now see one numerical problem. An artificial satellite revolves around the earth at a height of say 1000 kilometer. The radius of the earth is 6.38 into 10 to the power 3 kilometer. Mass of earth is this 6 into 10 to the power 24 kilogram, and g, capital G, universal gravitation coefficient, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर. फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी. सिंपल वैल्यू यू आर देखिए, आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, h is 10 to the power 6 मीटर, सब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, r की वैल्यू दे रखी है. ओके, r plus h you can calculate as per the requirement of expression. m is also given, so from the formula we can directly find out the value.
पुटिंग द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन v नॉट इक्वल टू रूट जी एम अपन आर प्लस है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7364 मीटर पर सेकंड, जैसे हमने निकाली थी 7.9 के करीब, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड थी, तो वही चीज यहाँ आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री राम।